Hello students, I am Dr. Ashish Kumar Suri. Welcome to revision summary part 5 of unit 5 of management. In this session we will discuss a numerical topic which is valuation of equity shares. You can expect one question from this topic. Expected mark will be 1, and because it is a numerical topic, so difficulty level will be difficult. So there are various models of equity share valuations. We will discuss these models one by one. So the first model is single period valuation model. So what this model says that if the investor holds the security for 1 year, okay, so investor अगर security 1 year के लिए hold करेगा, so the holding time period is 1 year in this case. The value of such equity share will be, okay, so the valuation will be V0, that is the valuation of current valuation of equity share is equals to D1 divided by 1 plus R plus P1 upon 1 plus R. Here D1 is the dividend per year, okay, dividend is the dividend for the year for which the investor is holding the equity share. P1 is the expected price of the share after 1 year. एक साल के बाद में इक्विटी शेयर का क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, एंड आर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर. हियर आर इज द required rate of return on equity share. So V0 will be D1 upon 1 plus R plus P1 upon 1 plus R in the case where the investor is holding the security for 1 year of time period. So we will look at a question. XYZ Limited is expected to declare a dividend of rupees 3.50. So D1 का वैल्यू हमें गिवन है rupees 3.50 and reach a price of rupees 200 a year later. तो क्वेश्चन में गिवन है कि 1 year later एक शेयर का प्राइस होगा rupees 200. What is the price at which the share should be sold now to the investors if the required return is 13%. So R का वैल्यू हमें गिवन है 13%, that means 0.13. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम ये जज कर सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल, ये क्वेश्चन किस मॉडल पर बेस्ड है. ये बेस्ड है सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि यहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो D1, P1 and R. Okay, so now V0, the current valuation will be D1 divided by 1 plus R plus P1 divided by 1 plus R. So D1 is 3.50, R is 0.13, तो 1 plus 0.13 plus 200 divided by 1 plus 0.13. So 3.50 divided by 1.13 plus 200 divided by 1.13. तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें, सो 3.50 divided by 1.13, this value will be 3.09, and 200 divided by 1.13, this value will be 177. So the required valuation of the share will be rupees 180.09. So according to information, we can identify that this question is based on single period valuation model, क्योंकि हमें डिविडेंड गिवन है, देन 1 ईयर के बाद में शेयर का क्या प्राइस होगा वो गिवन है, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है. Then we have multi-period valuation model. So if investor will hold the equity share for more than 1 year, then it will be these questions will be a part of multi-year valuation models. तो यहाँ पर हमारे पास में दो मॉडल्स हैं. The first model is zero growth model or constant dividend model. So according to this model, the dividend year on year will remain constant. There will be no growth or zero growth in the dividend, or the dividends are constant. It is an approach to equity valuation that assumes a constant non-growing dividend stream for infinite period. So for an infinite period, the dividend
declare will remain same. Okay, so the valuation will be summation d divided by 1 plus r to the power n. How we got it? d1 upon 1 plus r to the power 1 plus d1 upon 1 plus r to the power 2 and so on. So what we are doing actually in this model, we are discounting the dividend, or we are calculating the present value of all the dividends for infinite period, and we are taking a sum of that. So if we will calculate this, so in short the formula will be V naught equal to, that is the current valuation will be D divided by R, where D is the constant dividend. So हमें ये फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो वी विल लुक एट अ क्वेश्चन. ABC Limited Company has declared a dividend of ₹8 per share this year. It is expected that dividend would remain constant over a period of time. तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है that dividend would remain constant. तो इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल पर बेस्ड है. Calculate the intrinsic value or current price of the stock if required rate of return for equity owner is 12.5%. तो हमें डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड हमें गिवन है ₹8 एंड आर हमें गिवन है 12.5. नॉट 12.5% मीन्स हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 0.125. सो वी नॉट द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 8 डिवाइडेड बाय 0.125. So from here if we will calculate this value, it will be ₹64. So this will be the required value of the equity share of ABC Limited. Then next model is constant growth model, और इसको हम गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं. Okay, so this model says that the growth rate in dividend will be constant. So dividend will grow but at a constant rate. So if the growth of the dividend is at a constant compound rate, okay, so R is the required and R is the required rate of return for equity share, then current price or valuation will be calculated as V naught equals to D1 upon R minus G, where D1 is the dividend for first year, R is the required rate of return, and G is the growth rate in dividend which is constant. So Padmini Limited is expected to grow at the rate of 7%. So this means हमें dividend में growth rate given है 7% और it is 0.07. okay. Per annum and dividend expected at the end of the year is ₹10. तो हमें D1 का वैल्यू गिवन है ₹10. If the rate of return is 12%, R हमें गिवन है 12%, that means 0.12. What is the price of the share today? So price of the share V naught, it will be D1 divided by R minus G. So D1 here is 10, R is 0.12 minus G is 0.07. So it will be 10 divided by 0.12 minus 0.07, it will be 0.05. तो यहाँ से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो we will get ₹200. So this is the required valuation of the share of Padmini Limited at present. Okay. So this question came in July 2016 examination. The current market price of a company's share is ₹90. हमें current market price given है, that means हमें V0 का वैल्यू given है ₹90. Okay. And the expected dividend per share next year is ₹4.50. तो हमें डिविडेंड का वैल्यू गिवन है नेक्स्ट ईयर, दैट इज D1 हमें गिवन है ₹4.50. If the dividends are expected to grow at a constant rate of 8%, या हमें गिवन है कि डिविडेंड में ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, यानी कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल हमें यूज करना है. सो जी हमें गिवन है यहाँ पर 8%,
that is 8% means 0.08. The shareholders required rate of return is, अब यहां हमें R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, R हमें नहीं गिवन है, R का वैल्यू हमें बताना है। तो इट्स नॉट कि हमें हमेशा V0 का ही वैल्यू पूछा जाएगा एंड बाकी का वैल्यूज हमें गिवन होंगे, कोई भी वैल्यू हमसे पूछा जा सकता है एंड रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल इन डिविडेंड इज V0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। ओके, सो D1 हेयर इज 4.50, V0 का वैल्यू हमें गिवन है 90। ओके, 90 इक्वल्स टू 4.50 डिवाइडेड बाय R, R हमें कैलकुलेट करना है, R माइनस G 0.08। ओके, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वी विल गेट R माइनस 0.08 इक्वल्स टू 4.50 डिवाइडेड बाय 90। यहां से R माइनस 0.08 का वैल्यू हमें मिलेगा 0.05। सो R का वैल्यू हमें मिला माइनस 0.08 है, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 0.05 प्लस 0.08, सो R विल बी 0.13। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम परसेंटेज को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.13, if we will multiply it by 100, it will be 13. So R is 13%. So the required rate of return is 13%. So option number 2 is the right answer here. So these are various models for valuation of equity share. यहाँ से numerical question एक पूछा जा सकता है. You can practice more such questions. You can, so students, if you are preparing for IIT JEM, CSIR NET and NTGC NET, you can buy the study material of Edunkle. This will definitely help you to crack your examination. You can also download the app of Edunkle from your Google Play Store. On this app, you will find the support of more than 250 trained faculties who will help you to solve your queries and to crack your examination. Thank you very much.